अपना वैक्सीन ले लिया और आपने? जी मैंने भी। हमारे पूरे क्रू ने वैक्सीन लिया है। ये पूरा स्टूडियो सैनिटाइज्ड है, सोशल डिस्टेंसिंग हम अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, सो वी कैन टेक द लिबर्टी ऑफ गेटिंग आवर मास्क्स डाउन। लेकिन आप अपने मास्क पहने रखिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माइंड बेंडर्स। मैं हूं श्वेता और मैं हूं चैतन्य। और आज हम मिलकर चर्चा करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसके अलावा शायद ही कोई और टॉपिक इससे ज्यादा चर्चा में रहा है 2019 से लेकर अभी तक। करेक्ट, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। बाय द वे, डू यू नो द एवरेज साइज ऑफ अ वायरस? समवेयर इन नैनोमीटर्स आई गेस। You don't know the exact parameter? I think it actually varies from one kind to another. Okay, let's Google it then. Okay, I had Googled. Let me tell you, it's 20 nm in diameter, which is like 0.00000008 inch. But basically, it's invisible. Yet, it took over the whole world. I mean, such an achievement for this virus, yaar. They must be boasting na amongst themselves. The virus community that they changed the course of human history. They definitely did. पूरे देश को हमने बंद करके रख दिया. Quite an achievement for that virus. And just like they brought down the humans down, they brought the entire world down. But jokes apart, it actually created a lot of havoc. Absolutely right. कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कईयों ने अपने जॉब्स और बिजनेस भी खो दिए. But if you look at the internet industry, I guess this was perhaps the best phase for it. I agree with you on that. But soon, the internet became a source of information and misinformation, which led to spread of facts, stories, and hence some conspiracy theories regarding COVID-19. Yeah, और आज हम कुछ ऐसे ही conspiracy theories पे बात करेंगे and देखेंगे उनमें कितनी सच्चाई है या फिर they are just some creative imagination that people found light during the lockdowns. So theory number 1 claims COVID-19 is bioengineered or a bioweapon. Well, I guess this went really hot and guess what? It's still going. Yes, but its origin goes back to Dr. I.F.N., director of the emergency department of the Wuhan Central Hospital. Wuhan ये नाम तो अभी 2 साल में सबने सुना है. She was the one who treated the first ever COVID-19 patients in Wuhan during the 3rd week of December in 2019. Dr. I.F.N. जब देखती हैं कि कोविड के सिम्टम्स कई और लोगों में भी हैं, तो वो इस बात को अपने हॉस्पिटल में शेयर करती हैं और ये बात धीरे धीरे पूरे मेडिकल फील्ड और डॉक्टर्स में फैल जाती है. पर तब उन पर हॉस्पिटल ऑफिशियल्स ये इल्जाम लगाते हैं कि वो रूमर्स फैला रही हैं. पर जब बाद में जनवरी में कोविड कई और देशों में पहुंच जाती है, तब ये बात साबित हो जाती है कि आईएफएन झूठ नहीं बोल रही थी. Yeah, but I guess even the other doctors must be confused now or not clear about the virus. That's acceptable, I suppose, as it was a new infection and there wasn't much knowledge about it. Definitely was, but it gets a little tricky ahead. 13 February 2020 में हुबई डेली मैगजीन में डॉक्टर आईएफएन का आर्टिकल आता है जिसमें वो ये कहती है कि किस तरह चाइना ने कोविड-19 के मामले को सीरियसली नहीं लिया और उसे दुनिया से छुपाने की बहुत बड़ी कोशिश की. Yeah, but then दिन भर यही चल रहा था न्यूज में, चाइनीज वायरस. बट आई गेस वी ऑल हैव दिस हैबिट ना, कितनी बार हम कोई गलती को छुपा लेते हैं और सोचते हैं कि ठीक है कर लेंगे इस बारे में कुछ और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा. But that's not acceptable जब ये इतना बड़ा कंसर्न हो. Yeah, right. I agree with you on that. So then what happened to Dr. I.F.N.? मार्च 2020 में पीपल्स डेली मैगजीन में डॉक्टर आईएफएन के बारे में एक और आर्टिकल आता है जिसमें आईएफएन को प्रेज किया जाता है फॉर हेल्पिंग द फर्स्ट एवर कोविड पेशेंट्स. इन द सेम मंथ यानी मार्च 2020 में चाइना के पीपल मैगजीन में यह बताया जाता है कि किस तरह आईएफएन के कुछ इंटरव्यू वीडियोस सेंसर कर दिए जाते हैं बाय द चाइनीज गवर्नमेंट और तभी शी गेट्स द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर विसल ब्लोअर फॉर इन्फॉर्मिंग द वर्ल्ड अबाउट कोविड-19. पर इसके बाद डॉक्टर आईएफएन कहीं खो जाती है. फिर जनवरी 2021 में ब्लूमबर्ग रिपोर्ट से यह पता चलता है कि डॉक्टर आईएफएन अब ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुकी है आफ्टर अ कैटरैक्ट आई सर्जरी. What? I mean, how? Even Dr. IFN questions this. She had cataracts and had to go through a surgery which is pretty normal. She herself knew about this. But what's mysterious is that
IFN के 3 फेलो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट्स का मिस्टीरियसली डेथ हो जाना जस्ट बिफोर द सर्जरी, जिसकी वजह से ये सर्जरी कोई और करता है। So ideally the question is, एक साथ 3 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का डेथ, कैसे हुआ? It can't be a coincidence. Not at all, and this supports the conspiracy theory. Makes sense. Even I have heard that when these articles and interviews started now, via the social media, Chinese had banned the use of many social media apps. And when the world got to know about this via the internet, as it's not an easy to restrict the internet to larger extent, people started believing that China tried to keep everything about COVID under wraps. Definitely communist regime है तो काफी कंट्रोल है प्रेस पे, but soon these theories take another turn. That COVID-19 was a bioweapon which was created, synthesized in China. Yeah, it was a trending topic then for quite some time. In fact, it is still a trending topic. So its origin goes back to 31st December 2020 when Dr. Francis Boyle, जो कि एक प्रोफेसर है at the International Law University of Illinois College of Law, वो पब्लिश करते हैं उनके रिसर्च पेपर्स जिसमें वो कहते हैं कि बायो वॉरफेयर एजेंट्स जो कि विनीपेग के एक कैनेडियन लैब में काम करते हैं, वो कोरोना वायरस को स्मगल करके वुहान लैब लेकर आते हैं जहां वो वायरस लीक कर जाती है। और फिर जहां हम सबको ये मालूम है कि कोविड-19 वायरस वुहान के एक सी फूड मार्केट से फैला था, ये वायरस वहां कैसे पहुंचा, इसका आंसर अब तक नहीं मिल पा रहा। But isn't it a difficult task to find out where the virus came from? Like it becomes so tough to find the thief who escapes, and this is an invisible virus. Exactly, our enemy here, the thief here is invisible. पर जब पूरी वर्ल्ड इसके चपेट में आ जाए, then सवाल तो उठेंगे ही. And meanwhile, China's behavior at borders and even inside their country creates suspicion always. But moving on to this particular conspiracy theory, इसी दौरान एक किताब The Eyes of the Darkness जो 1981 में पब्लिश हुई थी, that comes into the frame और इस conspiracy theory पर बिलीव करने वालों का भरोसा और भी बढ़ जाता है। इस बुक में यह कहा गया है कि चाइना में वुहान के लैब में वुहान 400 के नाम से एक वायरस बायोमेडिकली इंजीनियर्ड किया गया था। Conspiracy theories का मानना था कि this wasn't a coincidence, rather this is a proven fact. I am not sure, but I still feel like it could be a coincidence. But I'm just a little confused, just like the scientists looking into this matter. I just feel the same. I'll need much more convincing now. ठीक है, because it's a huge thing, and right now I guess the priority is of course to stop the virus. Only if the virus is real. You don't believe COVID is real? No, of course I do. But there's another conspiracy which believes COVID is a hoax. But before we move into that, let's figure out what the scientists say about COVID, whether it originated naturally or was it really engineered in China. जब countries like Japan, Australia and European Union ने मांग की SARS-CoV-19 वायरस के origin का robust investigation हो, तो WHO itself sponsored the investigation. Even the US President Joe Biden showed his concern, asking the US intelligence to put their efforts to find the facts. We're just glad that he had a different president of the United States of America who took matters into his own hands. पर इस थियोरी में स्ट्रेंथ होने के बावजूद अब भी मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट का यही मानना है कि कोविड-19 नेचुरली ओरिजिन हुआ, क्योंकि इससे पहले कोई भी लैब लीक वायरस इस तरह इतने फास्ट रेट से स्प्रेड नहीं हुआ। जनरली लैब लीक से स्प्रेड वायरस एक रीजन को ही अफेक्ट कर पाते हैं, जस्ट लाइक इट वाज सीन इन द ईयर 2004 जिसमें बीजिंग के 2 वायरोलॉजिस्ट्स SARS यानी कि सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस को स्टडी करते वक्त इसी डिजीज से अफेक्ट हो गए थे। So then that goes against the theory that says COVID is a bioweapon. But during the same research, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट से ये ढूंढा कि कोविड-19 वायरस का डीएनए एक और कोरोना वायरस के टाइप से 96% मैच करता है, जो कि 2014 में हॉर्स शू बैट्स में देखा गया था। बट इसके बावजूद साइंटिस्ट का कहना है कि there must be another carrier in between these bats and humans. और उस कैरियर की खोज अब तक जारी है। So this means it again puts a small doubt on who spread the virus to humans, as 96% match of DNAs is still not enough. But it's still either there was a natural carrier or was it synthesized so that it can spread to humans?
Yes, and this further asked for some more research. Recently, May 2021 में US intelligence और एक international team of biologists led by professors from the University of Sydney and the University of Edinburgh ने कुछ evidences पर investigate किया और उन्होंने यही conclude किया कि COVID-19 एक zoonotic spillover disease है, मतलब COVID animals से naturally humans में आया है. So this nullifies both the conspiracy theories. Yes, it does, but still, the early behavior of China to hide or suppress the truth of COVID-19 keeps bringing it back under the suspicion and provokes investigation. Okay. So these were two major conspiracy theories regarding COVID-19, which still need a lot of investigation, research, and a lot of answers that need to be answered before we come to any conclusion. But there is some funny conspiracy theory that influences a lot of people. Okay. Number 1, COVID-19 is being spread by 5G networks. Like seriously, COVID-19 is being spread by 5G network system and it is a global conspiracy. Oh my. I think people did not have any work and that's where we had these 5G theories coming in. Oh yes, that was funny. I mean, I have seen that complete image showing how COVID can spread via radiations. Well, while it's scientifically impossible, those who are not aware of science properly or don't have an in-depth knowledge about what they are seeing in this picture, they might fall for it. They did fall for it. There were so many people who had actually got influenced. You know, in Netherlands, Belgium and Ireland, जहाँ लोगों ने कहीं जाके 5G network towers को जला भी दिया. But do you know who came up with this theory? No. So this theory was propagated by David Icke, जिसे उनके followers एक medical scientist मानते हैं. But in real, he is an author of numerous books based on global conspiracies. So you mean to say he tried to create a sci-fi plot here and people, since they were not allowed to go to cinema halls, they believed in and they bought? I don't believe this. Yes, but it's also important for us to understand this kind of misinformation so that it doesn't lead to any kind of escalated situations. So the first fact is, 5G networks फिलहाल hardly 34 countries में मौजूद है, पर COVID is everywhere. Secondly, it's simply impossible to spread viruses with network systems that use electromagnetic radiations because viruses proteins और nucleic acids से बने होते हैं. Okay, I didn't get those scientific terms, but I do believe you, Professor. Now, another theory that influenced many people here is that COVID-19 is a hoax. According to this, COVID-19 doesn't exist at all and it was actually a money-making scheme, like by selling masks, sanitizers, vaccines, and do you know how many terms came up like scandemic, pandemic? ये सारी theories और काफी terms famous हुए like the ones that I said. हालांकि ये theory US से निकलते हुए भारत तक काफी popular हुई with the help of social media of course. पर जब हम अपने ही लोगों को देखते हैं इस बीमारी से जूझते हुए और दम तोड़ते हुए ना, तो अपने आप ही थ्योरी डिबंक हो जाती है ना. Absolutely. We have seen a lot of protests happening in US. I mean, understand that it sounds like such a nice plan to increase the sale of sanitizers, masks, etc. But it's real. It's not that easy to bring the complete world into this plan. Like, just see, the world has been planning since years to join hands against global warming, terrorism, etc. Still, we stand nowhere on these. Then how can you just say that this plan of pandemic brought the whole world together just for business? That's just a good inspiration for some fiction movie, I believe. Nice explanation, huh? All in all, चाहे इनमें से कोई भी conspiracy theory हो, it spread along with the virus via social networking. और एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेट स्टैटिक्स के सर्वे से ये पता चलता है कि 27.5% ऑफ इंफॉर्मेशन जो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है, सब कोविड-19 से रिलेटेड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं. और जब इन सारे थ्योरीज के बेसिस ही सोशल मीडिया और इंटरनेट हो, तो फिर व्हाट कैन वी से? इट्स फार फ्रॉम द रियलिटी. Certainly is, and I guess right now the priority should be how to keep ourselves and our family members, especially the elder family members, safe and away from this virus. Instead of just getting carried away by any theory, we must take the necessary steps that are advised by our government and the health organizations.
So friends, this was all about the conspiracy theories regarding COVID-19. See you in the next one with some more interesting and curious theories. Till then, keep watching Mind Wars. And also, don't forget to fine-tune your brains with Mind Wars quiz only on the Z5 app.